राइट विंग गवर्नमेंट दे ऑल थिंक द सेम वे. अभी भी उनका कॉमेडी का कॉन्सेप्ट आगरा में काफी हद तक वो राजू श्रीवास्तव वाला ही है. काम क्या करें, उनका फिल्मों में जाओगे एंड दे यूज्ड टू ऑलवेज थिंक फिल्म, उनका फिल्मों में जाओगे शक्ति कपूर कादर खान जैसे बनोगे. मैंने कहा नहीं. एवरी किंग हैड अ जेस्टर and that jester used to ask tough questions what normal people did not, under the guise of jokes. Yes, yes. And that was the kind of comedy I always wanted to do. Okay, so we have with us today someone who trades in stocks and crypto and currencies. He also does stand-up comedy. I can always do this later. And his name is Ateev Dang. So, welcome, Ateev. Thank you. We'll use this opportunity to know a bit more about you. So, boring stocks, trading, money. Where did comedy come into all this? Or did comedy happen much earlier and this happened later? Pretty much. But before that, I used to work in a bank. But growing up, I always wanted to be a comedian. But when I was growing up in India. So that in India, the comedy was very riff-raff. So, I mean, let's hold it for that. You said growing up, you wanted to be a comedian. So, जब आप 5-6 साल के बच्चे थे, 5-6 साल नहीं, करीब 13-14-15 साल. तो आपसे पूछे बेटा बड़े होकर क्या करोगे, तो आप कहते थे क्या कॉमेडियन बनूंगा. हाँ, और लोगों को समझ नहीं आता था. वो कहते थे वो तो ठीक है बट काम क्या करना चाहते हो. मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ. काम क्या करें, उनका फिल्मों में जाओगे एंड दे यूज्ड टू ऑलवेज थिंक फिल्म, उनका फिल्मों में जाओगे शक्ति कपूर कादर खान जैसे बनोगे. मैंने कहा नहीं. They didn't used to understand it. Okay. And then Shekhar Suman happened when I was about 13-14. He started the stand-up comedy scene in India, he and Javed Jafri, but I still found them very riff-raff. मेरे को लगता था कि बचकानी कॉमेडी हो रही है. क्योंकि at that time India में, yes, Johnny Lever was there, but comedy क्या होती थी? He used to mimic other people's voices. Mimicry होती थी. उसको comedy नहीं कह सकते. And then I used to watch USA के shows like George Carlin. One of my friend made me watch it when I was like about 16, class 10th with him, 16. And when I first watched it at my friend, and I loved it. I was like, हम ऐसी comedy क्यों नहीं कर सकते? Where it's making you uncomfortable, asking you the right questions. Yes. And still making you laugh. Like मेरे लिए कॉमेडी होती थी जब हम स्कूल में शेक्सपियर पढ़ते थे, तो आपने देखा होगा वहाँ हर किंग एक जेस्टर रखता था. Yes. Every king had a jester, and that jester used to ask tough questions what normal people did not, under the guise of jokes. Yes. Yes. And that was the kind of comedy I always wanted to do. धर्म खतरे में है. पीछे ट्रंप ने अनाउंस करा कि जो है हम मून को कॉलोनाइज करेंगे. वो कहते हैं, एक दोस्त ने आकर मेरे को बोला, और ये फैक्ट है, कहता है कि ये सारा प्लान हमारे धर्म को नाश करने के लिए है, इससे हमारा धर्म खतरे में. मैंने कहा मून की कॉलोनाइजेशन से हमारा धर्म खतरे में कैसे है? कहता है अगर हम मून पे जाकर रहने लगेंगे तो औरतें करवा चौथ का व्रत किसे देख के दौड़ेंगे. It kind of tends to be, although in a funny way, anti-establishment and questioning things around you. Exactly. And having a laugh, and which can be very impactful, isn't it? That is correct. Okay, but did it run in the family? ये भी होता है ना कि ये मम्मी की तरफ से आए, पापा की तरफ से. Comedy तो नहीं, but literature, yes. Like my father himself is a poet. He's written close to 100+ poems, and 7 तो उनकी novels publish हुई हैं, and then he's written about 20 odd books. अभी लास्ट वो पाकिस्तान गए थे, उन्होंने उसके ऊपर बुक लिखी थी. एंड अभी उन्होंने एक बुक आगरा की हिस्ट्री के ऊपर लिखी है, बियॉन्ड मुगल्स, क्योंकि आगरा से हूँ मैं. हाँ जी. ताजमहल तो लोग यूजली ताजमहल पे देखा था, बट ही इज रिटन अ बुक, तो उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही कर रहा हूँ इस वक्त. ओके. सो हमें आगरा पे याद आया, मैं शाहदरा एक जगह है दिल्ली में, वहाँ से हूँ. हाँ, तो उस पे one spontaneous jokes है ना, how people can be funny, and Shahadra and Agra, I mean not many may be aware, but in those days they were well known as places where people could get psychiatric help. They were hospitals
जिसको डेरिवेटरी भाषा में बोलते हैं पागल खाने होते थे. So I remember I was at the Shahadra railway station and someone comes and asks the question कि भाई साहब यहाँ से आगरा का टिकट मिलेगा? And the man behind the counter who was probably from Eastern UP replies कि तेरा शाहदरा में काम नहीं बढ़िया के? Do you think Agra has an environment where this happens? It's becoming now, like they're opening up now. Of course, अभी भी काफ़ी आगे जाने की ज़रूरत है. अभी भी जोक्स लेने में थोड़ी दिक्कत होती है इंडिया में. And we can see the example of Munawwar Farooqi, who pretty much spent time in jail for jokes he did not even crack. Yes. People like Kunal Kamra जिनको death threats regularly मिलती रहती है. So, people still want you to be more like आगरा से हमारे कई अच्छे कवि निकले से शैल चतुर्वेदी हैं आपके. ऑफ कोर्स गालिब मीर तो आगरा से हैं ही हैं और नज़ीर अकबर आबादी. बट अभी भी उनका कॉमेडी का कॉन्सेप्ट आगरा में काफ़ी हद तक वो राजू श्रीवास्तव वाला ही है. अच्छा. कि किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए. अच्छा. एंड मैं वरुण ग्रोवर से ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. तो वरुण ग्रोवर जैसे कहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन करो, अनकंफर्टेबल करो, एंड स्टिल मेक द एंड व्हेन दे गो बाय दे नीड टू बी एबल टू थिंक, रिफ्लेक्ट. हाँ, वो सही कह रहा है. Exactly. So by the way, Ateev is going to be at the Melbourne Comedy Festival on 14th of April. Thursday, the 14th of April, 11 o'clock in the night. और जो आप सोच रहे हैं अगले दिन काम पर जाना पड़ेगा, वो नहीं है क्योंकि वो गुड फ्राइडे है. That is correct. So that's a holiday the next day. So please check out. What's the name of the show? Boats and Bogans. Boats and Bogans. Yeah, so it's a show where there are immigrant comedians which are on the boats, and then there are local Australian which are on Bogans. मैं अगर कोई मेरे को अच्छा जोक या चुटकुला हिंदी में मालूम है और फिर उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँ तो it always falls flat, and especially when I'm talking to Australians, traditional white Australians, they always fall flat. So how do you make that work? Yes. So देखिए, सोच तो मेरी अभी भी हिंदी में है. I think in Hindi then translate it, and उसमें क्या होता है कि sometimes when I'm writing in Hindi a joke looks fantastic. The moment I translate it in English, the whole culture and things are so different, I have to discard it. So out of every 5 jokes I write, there's only 1 or 2 of them which I can use in English. But then interestingly, जब मैं political satires लिखता हूँ, because in India and Australia, though in both places we have a right-wing government, somehow when I'm translating it just goes together, because right-wing government, they all think the same way. Okay, so कभी ऐसा होता है कि लगता है कि यार अब आगे से कुछ फनी आइडिया मुझे नहीं आएंगे, खत्म ना हो जाए मेरा स्टॉक कभी? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो I was actually watching some other comedian और लग रहा था कितना बेकार काम कर रहा है ये. And then we are 80s and 90s के kids. तो हमारे टाइम पर खास तौर पे आगरा में तो 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं होती थी, इंटरनेट टीवी होता नहीं था, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, उसी पर सब होते थे. तो हम लोग आधा टाइम दोस्तों के साथ बिताते थे. एंड आई वाज लाइक, अगर मैं खाली अपने दोस्तों की स्टोरी सुनाऊं which people can relate to, they would make people laugh. And that's how I started. When I started telling my life stories growing up as a kid. Then of course now I'm married for 16 years, तो जब आप husband wife के आपस में jokes करते हैं, that's universal. that goes there. Your problems are same. जैसे कि not walking on carpet with shoes on. अब शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि कार्पेट की जिंदगी मेरी जिंदगी से लंबी होनी चाहिए. but that's a problem everyone faces, even my white friends faces, so they can relate to it. अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ ही अपने आप में कॉमेडी है. like a lot of the times you don't even have to make satire. To give you an example, Corona की जब Corona था आपका पीक में, people were literally dying, and then one of the ministers in India, Atwale, I think, he came and started promoting भाभी जी के पापड़, and he said you eat that, इससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा. तो अब इसके आगे कोई क्या सटायर करेगा? You just read the news. That's funny in itself. That's a satire in itself. Is there a particular genre you follow? I personally, given a choice, love to do dark comedy, but somehow मैं ज़्यादा स्टेज पे नहीं करता जब तक लिमिटेड ऑडियंस वो ना हो. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस. इफ आई एम doing a joke in my side of the town,
where there even though हमारे एरिया में लेबर ज़्यादा दिखती है, but somehow जब मैं shows करता हूँ the Bogans and right wing people come more, then I play safe. But if I'm doing comedy in Dirty Secrets Lounge, which is in Collingwood or in Brunswick, a lot more hipsters and youngsters come. There I can make those dark comedy and those left-wing comedy as well, where I question the government, and they love it. When you first stood in front of an audience who had come to laugh listening to you, what was it like? I mean, Initially तो पहली बार तो मेरे को बहुत डर लगा था. तो हमने पॉइंट कुक में किया था, तो हमने वहाँ पर कीड़ा नाइट करके करी थी, and we did a gold coin donation. Okay. So we were not expecting anybody to come, but 20-30 people turned up. Okay. And Indian, क्योंकि कीड़ा करके नाम था तो सारे इंडियन रहे, तो हिंदी में ही करा था. And जब पहली बार मैं स्टेज पर गया था मैं बहुत नर्वस था, बट वो जब वो पहला लाफ्टर आता है ना, हा 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 हा, एंड देन इट्स लाइक इमीडिएट एड्रेनलिन रश, एंड देन यू गो ऑन, then you know that you belong. Yes, exactly. Okay. मेरा बॉक्सर शॉर्ट्स अंडर गया, कच्चा हिंदी में जिसको बोलते हैं, कमरे में पड़ा हुआ है. यूजुअली आवाज आई कब घर में, अतीफ अतीफ, मैं घबराता हुआ कमरे में गया. यूजुअली कोई क्या बोलेगा कि इसे क्या है, उठाओ इसे और इसको सही जगह पर रखो, बट नहीं, अगर हम ऐसा बोल देंगे तो हम बीवी कैसे, we would be communicating one on one just like the way God and language intended to be. हमारी आदत है गोल गोल बात करने की. तो क्वेश्चन मुझसे ये करा गया, ये क्या है, ये तुम्हारा है. मैं लिखा ऑफ कोर्स मेरा है, और अगर मेरा नहीं है तो ये सवाल मुझे करना चाहिए, सवाल मेरे उठने चाहिए. So you didn't do comedy in India at all, or I mean, इंडिया में थिएटर मैंने किया है. We used to do a lot of street plays. So street plays दिल्ली में करते थे फ्रेंड्स के साथ while studying. तो street plays हमने काफी करे हैं, और उसमें again we used to question the government, environment. और वो एक चेंज आया है कि पहले हम जब गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते थे तो कोई कुछ नहीं कहता था. अब आप इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशली क्वेश्चन करो एंड यू गेट अ होल टोरेंट ऑफ अब्यूज फ्रॉम एवरीवेयर. लास्ट ईयर वी डिड अ शो अबाउट 80 टिकट्स हमने बेची थी, कॉल्ड कॉमेडी. हमारा एक ग्रुप है कॉमेडी ढाबा, इंडियन एंड पाकिस्तानी लोगों का, तो वी डू हिंदी एंड इंग्लिश शोज. लास्ट ईयर वी डिड इट होली के टाइम पर इन मार्च. इट वाज ऑल सोल्ड आउट एंड एवरीबॉडी हु केम देयर स्टिल आफ्टर कि आपका अगला बड़ा शो कब है. वी आर प्लानिंग अ बिगर शो दिस टाइम. एक बार कॉमेडी फेस्टिवल खत्म हो जाए, 150-200 सीटर, so we're going to take it bigger. Okay, fantastic. And we're also planning a tour. We'll probably take it on road as well and take these comedians with us. Okay. It sounds very interesting. Or I mean, of course, you see many comedians go into TV series and films, etc. Is that also somewhere on? Because frankly speaking, जब भी मैंने किसी कॉमेडियन की टीवी सीरीज देखी है, चाहे वो वीरदास की हसमुख हो या बिस्वा की लाखों में एक हो, I've seen the writing deteriorate because then they go into more money making and उनका जो stand up का work है, I've seen that gone downhill as well because then they go into that money run. Of course, everybody loves to be on Netflix and Amazon, but ideally, like मेरा dream है to perform at Montreal Comedy Festival, which is the biggest one in the world, and to be known as a stand-up comic. I think Melbourne is a good place to start. I mean, so all the best, and again, reminder. So you are on Boats and Bogans as part of the Melbourne International Comedy Festival. 14th of April, 11 o'clock in the night, which is a Thursday. That is correct. Good luck. Nice to talk to you. That is my people. Thank you. Thanks a lot. Bye.